नमस्कार दोस्तों। आज के वीडियो में हम स्टॉक रिव्यूज करेंगे। दो कंपनीज को पढ़ेंगे आज हम, और दोनों कंपनीज जो है वो पावर प्रॉक्सीज है। तो जो एंड इंडस्ट्री यहाँ पे है वो ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन, पावर ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन के एंड इंडस्ट्री है, राइट। दोनों कंपनीज जो है, these are power ancillary companies, just the way we analyzed auto ancillary companies yesterday. These are power ancillary companies, right? And कुछ similarities है इन दोनों stocks में। एक तो दोनों small caps है, करीबन 5,000-9,000 करोड़ market cap की companies है। दूसरा, ये दोनों companies जो है काफ़ी recently list हुए हैं, राइट। 8 महीने भी नहीं हुए एक तरह से लिस्ट होके इन कंपनीज को। तीसरा, अगर आप देखोगे इन दोनों कंपनीज के स्टॉक प्राइस में आपको कहीं ना कहीं कुछ एक सिमिलैरिटी दिखेगी। तो जो जनवरी, फरवरी, मार्च के बाद, अप्रैल के बाद एक तरह से जब स्टॉक मार्केट ऊपर गया, तो ये स्टॉक प्राइसेस जो है दोनों कंपनीज के स्टॉक मार्केट के साथ ऊपर जाना शुरू हो गए। तो काफ़ी इनहेरेंट स्ट्रेंथ दिखा मुझे कुछ कंपनीज के, ये दोनों कंपनीज के बिजनेस मॉडल में। इनहेरेंट स्ट्रेंथ बिजनेस मॉडल से ज़्यादा एक तरह से जो एंड इंडस्ट्री है, जो लार्जर इंडस्ट्री है, राइट, वो एक अप साइकिल में, एक अप ट्रेंड में है। तो ये कंपनीज भी एक तरह से जब तक सिक्लिकल कंपनीज है, ऑब्वियसली पावर क्रिटिकल इक्विपमेंट्स या फिर B2B कंपनीज है, लंपी सेल्स ग्रोथ होता है इनका, तो सिक्लिकल कंपनीज है। बट पावर का एक अप साइकिल चल रहा है, एक स्ट्रक्चरल ग्रोथ एक तरह से पावर में दिख रहा है। पावर सेक्टर में बुलिश सेक्टर है ये फिलहाल, राइट। तो अगर आप देखोगे बहुत सारे जो प्रॉक्सी कंपनीज है पावर के, ट्रांसफॉर्मर्स वगैरह काफ़ी ऊपर जा चुके हैं। सो दीज कंपनीज एज वेल आर इन एन अप ट्रेंड राइट नाउ। तो अगर आप देखोगे यहाँ पे द 50 DMA एज वेल एज द 200 DMA, मतलब द शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म up trend is pretty evident. The stock price is above 50 DMA and 200 DMA, right? So these are stocks in momentum right now, right? So we'll take up the stocks, we'll do the fundamental analysis. I'll give you the brief about the companies. So the first company is Transrail Lighting Ltd, and this company has been suggested by Doc Runner, right? तो इस company का थोड़ा brief समझ लेते हैं for the people who do not have a lot of idea about this company, right? So this company is into the installation and manufacturing of poles and conductors, right? तो जब ये जो super structures अगर आप देख रहे हो यहाँ पे, right? So these are the poles which I'm talking about, right? And the conductors are these wherein the power kind of passes through, right? So this company is into the manufacturing of these conductors as well as these poles, right? So transmission and distribution companies के साथ ये companies काम करते हैं, right? So the end industry, T&D, transmission and distribution companies, railway जो electrification हो रहा है, that is where they're contributing as well. So these are EPC companies, right? तो ये EPC contractors होते हैं, and 49% of contribution that is coming to the top line is coming from international markets. So domestic markets is 51%. The company is in a very conscious, this company as well as the next company as well, in a very conscious way, they are trying to reduce their global kind of footprint and concentrate more in India because they see more business in India, right? And international business, for example, Bangladesh वगैरह में बहुत receivables फंसे हुए हैं और contracts एक तरह से फंसे हुए, जिस पे हम बात करेंगे, right? So the top line, 49% top line is international market, 51 is domestic markets. They want to get domestic more, like 60-65% domestic market में अपना business रखना चाहते हैं। And this is 83% of the sales come from government. तो ये B2G कंपनी है। तो B2G कंपनी है, मतलब गवर्नमेंट के साथ काम करती है। रिसीवेबल्स की बहुत बड़ी दिक्कत है इस कंपनी में, वर्किंग कैपिटल इसका साइकिल बहुत लंबा है, तो वो इसके नंबर्स में काफ़ी अच्छी तरह से रिफ्लेक्ट हो रहा है। बट द गुड पॉइंट, द प्रोज अबाउट दिस कंपनी, इसका जो ऑर्डर बुक है, टेरिफिक ऑर्डर बुक है, करीबन 16,000 करोड़ का ऑर्डर बुक है, विच इज़ 3x of March 2025 sales, at least FY25 जो March FY25 था, ये पिछला साल था। These are 3x of those sales, and we are looking at companies which are 2x of the previous year's sales, right? Only when you have companies which are 2x of previous year's sales, then you could have stock prices going up by 3x, 4x, 5x over a period of like 3 to 5 years, right? तो मल्टी बैगर तो नहीं कहूँगा मैं इसको, बट इसमें जो लक्षण जो है वो मल्टी बैगर के ज़रूर है, right? So this company has done a capex of around 90 crores, तो इन्होंने capacity अपनी, the capacity is kind of expanding right now. So they have in FY25 they had 84,000 MTPA का capacity. This is something which is going to be 1,73,000 in the coming year, right? Guidance मैं maths दिखा दूंगा, 23 to 25% sales growth का guidance दिया है with an EBITDA of around 12.5%, right? 400 crore का IPO raise किया है December 2024 में, and most of the IPO would be kind of money which
this company is going to get from the IPO, which it has already got from the IPO actually, working capital requirements के लिए इस्तेमाल होंगे, and this 70 crore capex is something which they would be allocating capital to, right? तो weaknesses के बारे में बात कर लेते हैं, right? तो EPC contractors है, चाहे फिर आप roads बना रहे हो, bridges बना रहे हो, या फिर ये towers बना रहे हो, right? Competition तो बहुत ज़बरदस्त होता है, low barriers to entry होते हैं, bidding process होता है, इनका वर्किंग कैपिटल साइकिल लंबा होता है क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट्स जो होते हैं गवर्नमेंट से मिलते हैं। इस कंपनी में खासकर जो इसका एक प्रोजेक्ट है 3100 करोड़ का प्रोजेक्ट है जो बांग्लादेश में है, इट्स अ की मॉनिटरेबल। ये काफ़ी बीच में रुक गया था वहाँ पे जो भी जियोपॉलिटिकल क्राइसिस हुए थे, सो दिस कंट्रीब्यूट्स लाइक 15% टू द टॉप लाइन, राइट? एंड देयर आर 400 crore which is pending from the Bangladeshi government, right? So this is something which we need to keep an eye on, right, when we understand and analyze this company, right? तो इसका fundamental analysis कर लेते हैं। कंपनी के numbers जो है काफ़ी अच्छे numbers है, right? तो if you look at the sales growth for the last couple of years, तो power sector since 2021 2022 is doing really well। तो ये companies भी अच्छा कर रहे हैं। तो पिछले 3 साल का sales growth, compounded sales growth is 32%, पिछले साल का it's 30%, PAT growth is phenomenal 72%, last year it's 42%, long term sustainability metrics पे companies काफ़ी सही है, 29% is ROC, anything an ROC and ROE of more than 25% is really good ROE ROC. So ROE is like 19%, which is okay, right? The operating profit margins of this company thoda cyclical itna dikh nahi raha hai, but actually the fact that they belong to a cyclical sector which is in an uptrend right now, so cyclicality इतने अच्छे से reflect नहीं हो रही है, right? Net profitability of this company is in single digits, so net profitability margin anything below 10% is something not we are looking at, right? इस कंपनी का CFO to EBITDA जो है वो 0 है। इसका मतलब ये है कि कंपनी though it is showing profits on its P&L statement, it is not converting those profits into cash flows, right? तो receivables का बहुत बड़ा इशू है, जैसे मैंने कहा गवर्नमेंट के साथ काम कर रही है, right? तो ट्रांसलेल राइटिंग का मैं receivables का एक पिक्चर भी दिखा देता हूँ आपको। If you look at receivables over here, पिछले 2 साल से -389 crores, -310 crores. So this is a receivables problem that this company is facing. थोड़ा इन्वेंट्री का भी इशू है, बट इस साल या 2025 में ही इन्वेंट्री का इशू आया। नॉर्मली ठीक ठाक ही था इन्वेंट्री का इशू, राइट? तो सो रिसीवेबल्स का इशू है इस कंपनी में, राइट? अगर आप इसका फ्री कैश फ्लो देखेंगे, भले फ्री कैश फ्लो 2 तरीके से कैलकुलेट करता हूँ मैं, राइट? फ्री कैश फ्लो 1 एंड फ्री कैश फ्लो फाइनल, राइट? फ्री कैश फ्लो 1 इज नथिंग बट CFO which is 768 crores minus capex 690 crores, तो एक तरह से पॉजिटिव आ रहा है। बट अगर आप CFO 2 या फ्री कैश फ्लो फाइनल देखेंगे, इट्स कमिंग एज -744 करोड़। तो मेरा जो FCF का फॉर्मूला होता है वो होता है CFO कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस माइनस केपेक्स प्लस अदर इनकम माइनस इंटरेस्ट ऑन डेट, राइट? तो इंटरेस्ट ऑन डेट जो है ये बहुत ज़्यादा था एंड बहुत हद तक कंपनी ने इंटरेस्ट अपना कम किया है। सो इफ यू लुक एट द लॉन्ग टर्म डेट ओवर ईयर, it was 132 crores, 120 crores, अभी जाके कुछ 39 crores हुआ है, right? But the short term debt is very, very high, 605 crores. So these are loans which have, life of around 12 months, right? But still, whatever loans that the company takes, they carry an interest cost or they have to pay an interest cost, right? So that's where the trade receivables का picture gets reflected, right? Working capital requirements के लिए IPO के proceeds भी इस्तेमाल किए थे क्योंकि trade receivables थोड़े ठुके हुए, right? Free cash flow, फिक्स्ड एसेट टू टोटल एसेट 7% है। EPC है, कॉन्ट्रैक्टर कंपनीज है, ज़्यादा कुछ फिक्स्ड एसेट्स होते नहीं इनके पास, राइट? P is 21, मेरे को P थोड़ा रीजनेबल लगा, राइट? If you look at the EPS growth for the last 1 year, it was 27%. स्टॉक प्राइस में इंक्रीज जो हुआ है वो करीबन 18% से हुआ है, सो वन कैन एट्रीब्यूट the increase in stock price to the earnings growth and not PE expansion, right? I forgot to show you the guidance. तो guidance जो दिया है अगले साल का management ने, they have given a guidance of 23% sales, 23 to 25% plus 12%, 12.5% EBITDA. So this is the calculation, right? Total shares 13.4 crore के है, right? FY26 का अगर मैं ये formula लगाता हूँ with an NPM of 6%, जो मैंने assume किया है, so the EPS growth comes out to around 22%. तो company जो है वो 20 plus sales growth, profit growth देगी, and
if I have to, ask the same questions which I normally ask myself after analyzing a company, can a company give more than 15% sales growth? Yes. Sectoral tailwinds तो clear cut है power sector में. EPS growth 20-22% तक आ जाएगा, जो calculation के मुताबिक 25% थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, या आ भी सकता है. Is it a cyclical business? Yes, it's a cyclical business, but it is in an uptrend right now. Is there profitability? No, there is no profitability. There is debt on the balance sheet, and equity dilute तो काफी recently की है क्योंकि IPO किया है कंपनी ने, right? There is predictability of cash flow. No, receivables का बहुत बड़ा issue है, working capital debt है एक तरह से बहुत ज़्यादा है. Can the balance sheet support debt for the next at least 1 year? It can. Is the stock undervalued? I think it is fairly valued. ज़्यादा overvalued भी नहीं है stock, काफी decent stock है. मुझे लगता है we can do a level 2 analysis for Transrail Lighting. Right, so this was a brief about this company, guys. Please subscribe to the channel if you haven't so far. If you find value in these videos which I'm making, please help me in taking the channel to the next level by spreading these videos in your community, obviously with people who value such content, right? And these are not stock recommendations, guys. These are educational videos. Please do your own analysis. Consider these videos as level 1 videos and do your own analysis, a level 2 analysis before you invest in the companies, right? So the second company which we will take is Q Power, right? So the first company, Transrail Lighting, was suggested by Doc Runner. The second company, Quality Power Equipment Limited. This is the second company which I'm talking about. Q Power Electrical Equipments Limited. This has been suggested by Praveen Manohar, right? तो ये कंपनी जो है ये पावर प्रोडक्ट्स बनाती है, ट्रांसफॉर्मर्स, रिएक्टर्स, कंपोजिट्स बनाती है, और दूसरे जो पावर इक्विपमेंट्स है वो भी बनाती है, कैपेसिटर्स वगैरह बनाती है. तो मैं एक पिक्चर दिखा देता हूँ विच विल गिव यू एन आइडिया अबाउट व्हाट दिस कंपनी मैन्युफैक्चर्स. तो यहाँ पे आप ट्रांसफॉर्मर्स देख सकते हो, राइट? दीज आर PLCC components, like these are instrument transformers. So predominantly transformers, a lot of business comes from transformers, right? So the products contribute around 41% to the top line, and the पावर इक्विपमेंट्स कंट्रीब्यूट अराउंड 56%. अगेन इसका इंटरनेशनल मार्केट्स में बिजनेस बहुत बड़ा है, 84% टॉप लाइन को कंट्रीब्यूट करता है. ये स्पेन वगैरह में जो भी पावर आउटेजेस होते हैं, पोर्चुगल वगैरह, टर्की में, दिस कंपनी गोज एंड रिजॉल्व्स दोज इश्यूज. द टॉप 10 कंपनीज गिव 58% ऑफ द बिजनेस, विच आई थिंक इज फेयरली ओके. द ऑर्डर बुक इज 3x ऑफ FY25. जो प्रीवियस कंपनी थी उसका भी ऑर्डर बुक काफी तगड़ा था, तो ये ऑर्डर बुक इस कंपनी का भी काफी तगड़ा है. इन द 15 months they want to accomplish this order book. They've done a capex of 125 crores. So they raised around 859 crores in February 25 for capex as well as M&A. कुछ promoters ने भी अपना पैसा लगाया, right? Guidance they have given around 700 to 850 crore revenue with a 17 to 18% EBITDA. वही जो weaknesses है, long working capital cycle, low barriers to entry, competition, जो the previous company में थे, वही एक तरह से इस company में भी एक तरह से weaknesses है, right? So again, the market capitalization of this company is around 5,000 crore. Previous company की करीबन 9,000 crore थी. If you look at the last 3 years, sales is 23%. इस साल का थोड़ा कम हुआ है. 3 years profit is 60%. This year it was 80%. ROC is 29%. ROE is 24%, right? तो दोनों ROE, ROC, long term sustainability metrics पे एक तरह से कंपनी ने अच्छा परफॉर्म किया है, राइट? इफ यू लुक एट द OPM, इट्स 19%, राइट? NPM जो है वो OPM से ज़्यादा दिख रहा था, तो मैं इनिशियली थोड़ा कंफ्यूज हो गया था कि नंबर्स मैंने गलत तो नहीं लिए. इट्स एक्चुअली द अदर इनकम विच इज़ वेरी वेरी हाई, विच द NPM और द profit after tax is very very high, right? तो net profitability इस कंपनी की 30% है. अदर इनकम का एक जो इन्होंने अपना एक आर्ग्यूमेंट दिया है कि these people work in Turkey as well, they have certain clients in Turkey, and कुछ ट्रांजैक्शंस जो होते हैं जो करेंसी में होते हैं, लायरा एंड लायरा LIRA एंड डॉलर्स, that get kind of factored in other income. They do not want to show it as operational income क्योंकि there's some exchange rate thing which is going around in the background, which that's why they have to show it as other income. So this is something which got factored in over here. So net profitability margin because of other income is kind of a bit more, 30% है, right? इस कंपनी की अच्छी बात यह है कि CFO to EBITDA इसका 0.6 है. तो this company, whatever profits it is showing, it is kind of converting those profits into cash flows, right? तो कंपनी का receivables या फिर अपने
कस्टमर्स के साथ बार्गेनिंग पावर काफ़ी अच्छा है. 0.8 is generally the cutoff. 0.8 is supposed to be a good CFO to EBITDA, but I think 0.6 is also fairly decent, right? ये कंपनी एक फ्री कैश फ्लो पॉजिटिव कंपनी है. 41 crore का फ्री कैश फ्लो है. रीइन्वेस्टमेंट रेट इज अराउंड 106%, so it's a fairly you know फ्री कैश फ्लो कंपनी पॉजिटिव है, तो इसका भी एक तरह से मार्जिन ऑफ सेफ्टी इस कंपनी में है, राइट? इसका नेट फिक्स्ड एसेट, इसने केपेक्स जो भी किया है, इट हैज गॉन अप लाइक ड्रास्टिकली इन द लास्ट 1 year इफ यू सी, राइट? 66 crore से 238 crore, राइट? बाकी कोई ऐसी दिक्कत नहीं दिखी मुझे इस कंपनी में, एक्सेप्ट इसका जो पी जो है वो काफ़ी ज़्यादा है. इसका प्रमोटर प्लेज अराउंड 4.29% का है. दैट इज़ फाइन. 492% इज़ नॉट अ बिग काइंड ऑफ नंबर, बट इसका पी जो है वो थोड़ा ज़्यादा है. ऑब्वियसली कंपनी का जो रेवेन्यू गाइडेंस है या फिर ईपीएस गाइडेंस है वो भी 76% का है. सो द पी एट विच द कंपनी इज ट्रेडिंग राइट नाउ इज 76. सो I've taken the guidance whatever has been given by the management, and the current EPS around 8.5 है. मेरे calculations में 15 दिखा रहा है EPS अगले साल का, FY26 का, which is a 76% growth in EPS, right? So somewhere the EPS is justified because the sector is in an uptrend, right? If you ask the same questions over here, सारे questions पे एक तरह से yes answer होगा. 15% से ज़्यादा sales growth आ सकता है. Sector is in an uptrend. Sectoral tailwinds है, yes. EPS growth also more than 25%. Cyclical business है, profitability business में है because the NPM is more than 10%, right? Predictability of cash flow है because CFO to EBITDA is 0.6, right? It can support itself with its balance sheet. अभी equity dilute की है, ज़्यादा कुछ debt भी नहीं है, right? But the P is a bit on a higher side, so we need to keep an eye on the stock price of this company as we go ahead. कोई अगर मेजर इवेंट आ जाता है जिसमें कुछ क्रैश वैश हो जाता है, तो वन कैन थिंक अबाउट at these two companies, looking at these two companies. So this was a brief about these two companies, guys. Hope you liked the analysis. Thank you very much. Take care. Bye bye.